Hello guys, what's up? Welcome back to another stream. Let's go. We are back with Honkai StarRail. Hello. Status maker bro. Hello bro. What's up? क्या हाल चाल? यार अपडेट हो रहा है हल्का सा. होपफुली रिस्टार्ट करने को मत बोले यार. बीटी हो जाएगी वरना. और बताओ क्या हाल चाल. कितने दिनों के बाद बे. हाँ यार क्या ही करे भाई. मैं जब भी सोचता हूँ ना अभी रेगुलर स्ट्रीम करूंगा तभी कुछ ना कुछ बीटी हो जाती बे. पक्की बात है. अभी बोलूंगा ही नहीं, सीधा करूंगा. नजर लग जाती मेरे को किसी की. पक्की बात है. अभी गेम मतलब स्ट्रीम शेड्यूल करके क्या फिर भी एक काम आ गया. नीचे जाके वापस आया मैं. थोड़ा सा लेट हो गया उसमें. एनीवेज ब्रो तुम कहाँ से हो, कौन से शहर से? मैं गुजरात से हूँ. हो गई बे, हो गई. लेट्स गो. अभी दोपहर को ही मैं खेला था तभी तो नहीं था यार अपडेट. डोंट नो क्या सीन है. अभी आ गया था पर आवाज ठीक है. कम करूं? कम करना चाहिए ना. 3 पे बराबर है. और न्यू अपडेट्स, न्यू बैनर्स, एवरीथिंग इज हियर. ओके. भाई ऐसा क्या आवाज निकाल रही है भाई. एकदम सिड्यूसिव. क्या बोलते हैं उसको. हाँ. फिर क्या है? अच्छा ट्रायल है. और कंपेनियन क्वेस्ट और हाँ ये मैंने ले लिया था आज. और यूकोंग सिमुलेटेड यूनिवर्स और ये. ओके. अबे यार अच्छे खासे दिन हो गए बे. मिशन क्या? मिशन देखते हैं. एक्स ऑफ वॉर. फिर ये हो जाएगा गोल्डन कैलिक्स. ओके. एक्स ऑफ वॉर कौन सा करे? ये करते हैं. मार दे मेरे को. जिंदा मत छोड़ तू. मार दे. कितना देगी? 50 के से ऊपर तो देना चाहिए. छी क्रिटी नहीं मारा बे. 32 के दे दिया. ले लो नॉर्मल ई से. क्या करूं मैं सीला का. कुछ कर भी तो नहीं सकता यार. मेरी ही तो कैरेक्टर है. बस आंटी जी बस यार. हाय बॉय. हे काफका वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सएप क्या हाल चाल. क्या तुम मेरे को मिलने वाली हो जीवन में? आर यू कमिंग होम गर्ल? ये 63. नाइस वन.
अब बाप रे बाप रे बाप रे। इसको उठा देते हैं। तू उठ जा रे बाबा। ओके अबे भाई अभी अभी तो मरी थी भाई। चीटिंग भाई। कैन यू सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट? यस ऑफ कोर्स। ए मेरे सीलक के पास तो अल्ट आई थी ना ड्यूट। ये एनर्जी भी खाती है क्या? मैंने कभी नोटिस नहीं किया। लॉल आज देखा मैंने। अरे भाई साहब 74,000। ओके आई टेक इट, व्हाई नॉट। आई एम अ न्यू प्लेयर। ओके नो वरीज। एक सेकंड। अबे नेमलेस ऑनर मैंने एक्टिवेट कर तो दिया था भाई। कितनी बार करवाओगे? 803-955-527। नारुतो भाई हल्की सी शर्म है। हल्की सी शर्म है नारुतो भाई। और बताओ मेरे को, बची है शर्म जीवन में थोड़ी सी? ऐसा स्कैम करते हुए शर्म नहीं आई आपको? बताओ नारुतो भाई क्या सीन है ये? नाम बदल के परेशान करते हो हैं? और बताओ नारुतो भाई क्या सीन है? ब्लेड वेड पुल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अरे भाई पुल करो। बीटीएस भाई वेलकम टू स्ट्रीम। व्हाट्सएप क्या हाल चाल? ट्राई माय सीलर। आपकी सीलर मैं ट्राई करता रहता हूँ यार बीच बीच में, पर अभी मेरी सीलर थोड़ी मैंने बिल्ड की तो मैं सोच रहा हूँ उसको ही ट्राई करूँ यार। ये काफका किधर से? बीटीएस भाई हमारे स्ट्रीम पे सब लोग हैं। बीटीएस भाई क्या नहीं गए यार गेंशिन? अरे वो खेलने वेलो क्या सीन है? खा रहा हूँ। खाती तो वो थी यार, और वो भी मेरा दिमाग। बताना मत किसी को। अरे भाई दोनों एक एक एचपी छोड़ दिए यार। मैं इसको मार रहा हूँ, कितना डैमेज आएगा? क्या क्रिट मारेगी? क्या सीलर क्रिट मारेगी? अबे नहीं मारा यार। शीश भाई कितने 100% क्रिट रेट कर दूं क्या? छी भाई मैं क्या करूं भाई इसमें? वो क्रिट न मारे वो भी मेरी गलती। ए लो भाई खत्म। हिल करो यार। बीटीएस भाई आपने स्टार्ट की क्या नई वाली क्वेस्ट वेस्ट या कुछ आर्कॉन क्वेस्ट या कुछ? टेक 2 गाइस। टिंगू वापरो नहीं। हमारे पास 5 स्टार है, टिंगू की क्या जरूरत है?
मैं बीटीएस भाई आपका वो अंकल यूज करूं, क्या नाम था यार उसका, मैं तो नाम भी भूल गया जीवन में। तो क्या मैं ये डोमेन सरवाइव कर पाऊंगा, क्या लगता है? लाइटनिंग लॉर्ड वाला, उसका नाम क्या था यार? नाम याद दिलाओ बीटीएस भाई। इतने दिनों से गेम खेला नहीं, नाम भूल गया बे। करो करो, आ गया। क्या सरवाइव कर पाएगा वो? जिन युआंग, हाँ जिन युआंग, या नारुतो भाई, यस थैंक यू थैंक यू। क्या जिन युआंग यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा गाइस? अबे यार ये आर्टिफैक्ट क्यों दे, क्रिटेड डैमेज ठीक है यार, पर क्यों दे रहे मेरे को ये? किस कैरेक्टर में काम आते हैं ये? नारुतो भाई, यस नारुतो है ये। हल्का सा स्कैम किया उन्होंने मेरे साथ, जस्ट किस कैरेक्टर का काम का है ये मेरे को बताओ यार, एक कैरेक्टर तो बताओ जिसमें काम का है ये। किधर है बीटीएस भाई आपका लाइटनिंग लॉर्ड? ये रहा। ये टीम ले जाओ क्या? ये टीम ले जाता हूँ बे। जीरो हंट कैरेक्टर। मैंने स्टोरी और न्यू फॉरगॉटन ऑल कंप्लीट कर दिया। हाँ क्या इतनी जल्दी? तू जिंदा है? डैम सुजीत गोज, वेलकम टू स्ट्रीम। व्हाट्सएप के हाल चाल? या मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल जिंदा हूँ यार। आके ही बॉय लिख रहे आना। इनका लाइटनिंग लॉर्ड कितना डैमेज देता है देखते भाई। 12,000 छी। बिना टिंगुन के तो 30 डैमेज देगा ही है। हाँ क्या ये देखो, दिख रहा है बीटीएस भाई डैमेज तो एकदम भयंकर। अल्टी मार देता हूँ भाई, मार देगा भाई आज। 14,000 ठीक है यार, नॉट दैट बैड। और क्या भी क्या सकते हैं यार। ए मेरा भाई ने 16,000 दिया इस बार, नाइस वन। आउच। भाई मर जा भाई, कल 50,000 मारा था, क्या बात का। टट्टा आज गेंशिन करेगा, देखते हैं रात को कर सकते हैं। ए मेरी टीम मरने वाली। आइस किधर पहुंचे? वेलो में। वेलो तो वो ब्रेक पे है वेलो में। बोलते हैं वेलो क्या? व्हाट वेलो? ट्राई माई सीलर, ठीक है नेक्स्ट टाइम आपकी सीलर ट्राई। अरे पर खत्म हो गए मेरे रेजिन। भाई अल्टी मार देता हूँ भाई, कुछ कर ले जीवन में, कुछ कर लेगा भाई, मार देगा थोड़ा। नेवर हर्ड बोला ना। भाई मारा मारा, मेरे भाई ने मारा। 27 के, ओके नॉट दैट बैड। A foregone conclusion. Here, this thunder. I'm on guard. Lend me your strength. Follow my charge. Conflict is pitiless. टट्टा 105 पुल थे कल हैं? किसके पास? आपके पास क्या या मेरे पास? मेरे पास तो है अभी भी। इन न्यू स्टोरी में यू कैन यूज डैनहंग ड्रैगन फॉर्म। हाँ ना, मैं देखा था, मस्त था ना। ये आंटी जी कल तक मर जाएगी गाइस, चिंता मत करो। इन गेंशिन में मेरा गारंटीड कोको के लिए। हाँ क्या? अरे भाई इतने सारे, ठीक है यार, कहाँ से लाते हो इतने सारे पुल्स यार?
मेरा भाई उसमें पकड़ा गया यार। बीटीएस भाई क्या सीन है आपके भाई का? ये लो भाई। है वो नीचे चला गया। लाइटनिंग लॉर्ड अभी तो आने वाला था। अरे पहले ब्रोनिया की अल्ट मारनी थी। माफ करो रे। कट कर देना गाइस। हल्का सा ध्यान नहीं दिया मैंने। ब्रोनिया अल्ट लेके बैठी करके। भाई कितने स्टैक हो गए तेरे? 8 हो गए। मार देखा कुछ डैमेज अच्छा वाला? 13k। बीटीएस भाई यू आई एम रिच एज हाँ क्या? There's no time to lose. Conflict is bitterness. You'll pay for that. Let me tell your Follow my charge. We've entered the भाई ये ले भाई अल्टी मार देता हूँ भाई। कब से पड़ी है यार? Hear this thunder. 16। बस भाई कितना मारेगी? पागल है क्या? strength. There's no time to lose. You don't look so good. Your assistance is timely. अरे भाई अल्ट मार यार। Conflict is bitterness. अरे भाई साहब मेरे को नहीं चाहिए ये, क्यों दे रहे हो? इसमें क्रिट्रेट है यार, लॉक कर देता हूँ। भाई ये लोग मेरे को वो जो मेरे को चाहिए वो क्यों नहीं दे रहे यार? क्या सीन है? कौन नजर लगा रहा है बैठ के? बताओ मेरे को। इसको तो ये नहीं ही मिलना चाहिए करके। हाँ सिमुलेटेड यूनिवर्स करते हैं। अबे इसे कोई काम का आया क्या वो? या फिर मैं जो फार्म कर रहा था वही फार्म करूं? कुरुरु मिलती है। और क्या ये? इंक्रीज द वीरर्स क्रिट रेट बाय 8% व्हेन द वीरर्स करंट क्रिट रेट रीचेस 70% और हायर। वीरर्स बेसिक अटैक एंड स्किल डैमेज इंक्रीज बाय 20। भाई 70% क्रिट रेट करूं मैं बैठूं यार? इंक्रीजेस वीरर्स इफेक्ट रेज बाय 10% व्हेन वीरर्स इफेक्ट रेज इज at 30% और हायर। ऑल allies crit damage increase by 10%। ये अच्छा है वैसे, हीलर्स के लिए अच्छा है ना? हीलर्स के लिए अच्छा लग रहा है। मैं तो ये फार्म करूंगा यार। ये क्रिट रेट बढ़ाओ, मेरा क्रिट रेट बढ़ाओ। है जी, अभी तो मेरे को वीकनेस दिखी थी यार। I'll end your misery. Who's next? Let me take. I'm on guard. Lend me your strength. कल वेपन बैनर पर 10 पुल किया, सोचा यूला का सिग्नेचर मिल जाएगा 10 पीटी में, फिर यूला निकल लूंगा। बीसी फेव लेंस दिया, मैं बोला ओके भाई। बात तो है यार, वैसे 10 पुल में थोड़ी ना मिलता है। अगर मिल जाता ना भाई, बता रहा हूँ भाई, छोड़ देता मैं खेलना, अनइंस्टॉल मारता ऑन स्ट्रीम। टू 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 टू। भाई मैं काफका का वेपन पुल करूंगा भाई, पक्की बात है। बहुत बहुत विशेष पड़ी है हमारे पास। Don't mess with me. करके देखा, अगर भगवान भी चाहते हैं यूला निकल। आ गया, भगवान ने बोला निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को।
अच्छा जेड को डालता हूँ यार, थैंक यू यार। What a headache. भाई मारा नहीं, शर्म कर ले सीले, शर्म। Who's next? I'll end your misery. टू, 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 टू। कितनी बेकार सीले कभी नहीं देखी। हाँ क्या, थैंक यू यार। अच्छी है भाई, अच्छी है भाई, सीला मेरी अच्छी है भाई, गैर से नहीं बोलते भाई। Don't mess with me. You'll pay lend me your strength. है मारा नहीं, अरे बाप रे क्या दर्द दे रही है भाई, ये ले भाई। जस्ट मैं सीला की तारीफ कर रहा था और सीला ने मेरे साथ ये किया भाई, क्या सीन है। We need a strategy. Will of preservation. Show your courage. A little something for everyone. वैसे दिसंबर में गुजरात आ रहा। हाँ क्या, आओ आओ यार, वेलकम। You'll overheat. What a headache. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. अबे इतना ज्यादा क्रिट रेट बढ़ाने के बावजूद क्रिट नहीं मारा इसने। Don't mess with me. क्या सीन है सीला, मत नहीं खेलना तो बोल दे यार, मत खेल भाई, Disappear among the sea of मतलब नहीं लड़ना। illusions of the past. ये अभी मारा ना क्रिट ना। Lance ablaze. Lance forward. What a headache. हाय भाई, रिमेम्बर यस बिल्कुल, पर आपका नाम यार, क्या नाम है आपका? इट्स योर बॉय रेक्स, या इट्स योर बॉय रेक्स, वेलकम टू स्ट्रीम। व्हाट्सएप, क्या हाल चाल? बिल्कुल याद हो यार, कैसे भूल सकता हूँ। Lend me your strength. Don't. Lance at the ready. What a headache. Let me tell your way. I'm on guard. अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलते हैं उसके बाद में, कुछ बोलते हैं पर मैं गलत नहीं बोलना चाहता इसलिए नहीं बोलूंगा। वेलकम वेलकम। वाना बी फ्रेंड तो हैं, आरंट वी? Don't mess वैसे with me. कुछ मस्ट विजिट जगह बोलना गुजरात में। गुजरात में मस्ट विजिट जगह, आप किधर आ रहे हो उसके ऊपर है यार। गुजरात में तो बहुत मस्त मस्त जगह है। Lance ablaze. दोस्त बनना चाहते हो? मेरे को पता चला यार, इंग्लिश में मेरे को आती है पढ़नी। मैंने बोला हम नहीं है, मैंने ऐसा बोला। This battle is. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. I'll free you from your chains. टाटा गेम में पूछ रहा फ्रेंड्स में ऐड करने के लिए, आ गया। Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. उसमें भी ऐड हो जाएंगे यार। मैंने कभी किसी को मना किया है क्या कोई चीज के लिए? मेरे को ये बताओ यार, किया है क्या किसी को? पूरा 15 दिन का टूर है, बोलना जरा कुछ अच्छा जगह। अरे गूगल पे सर्च कर लो रे बाबा, मिल जाएगा। फिर मैं आपको बोलूंगा और आपको वो जगह पसंद ना आई तो मेरे को ये रिस्क नहीं लेना बाबा। नहीं नहीं नहीं। तेरे चैनल का पासवर्ड दे देता हूँ यार। भाई मेरे को कुछ अच्छा मिलने वाला है क्या यार? दर्द हो रहा है देख के।
बट मुझे नहीं चाहिए तो नहीं दूंगा यार, उसमें क्या है यार। You don't look so good. Don't mess with me. गाचा गेम में पूरी जिंदगी जाने वाली लग रहा है, पर कुछ अच्छा नहीं मिलेगा मेरे को। Lend me your strength. टू 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 टू। पीछे से मारा हराम जादे को। What a headache. I'm on guard. You'll pay for this. Lend me your strength. I'll free you from your chain. क्या ये इसको वन हिट करेगी गाइस, क्या लगता है? आज बेस्ट हाइड्रो बॉय का बर्थडे है के चाइल्ड हा क्या? Among the sea of butterflies. Illusions of the past. करा करा वन हिट तो करा है बे। जॉर्ड 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 सीला जॉर्ड। चाइल्ड का बर्थडे है आज। Let me tend your wounds. Don't mess with me. Lance ablaze. Lance forward. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Who's next? Increases crit rate. नूब 25 को कुक को मिया मैंने देखा ना। पुल करेंगे मस्त मस्त। Don't mess with me. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. काफका भी पुल करेंगे, कोको में भी पुल करेंगे, दोनों पुल करेंगे। What a headache. Who's next? ओ 39 का तो ई मारा इसने सिर्फ। कई बार सीला एकदम ओपी हो जाती है, कई बार एकदम हग देती, पता नहीं क्या सीन है। और कुछ नहीं है ना तोड़ना। अर्ली स्ट्रीम 3 बजे 25 को। नहीं यार देखना पड़ेगा, वो तो कॉलेज है या नहीं है, कौन सा दिन है। Lend me your strength. अबे अभी पता नहीं, थोड़े टाइम से कॉलेज वाले एकदम स्ट्रिक्ट हो गए बे, पढ़ते नहीं जाते तो जाना पड़ता है फिर। Lend me your strength. What a headache. डीसी में लाइव करूंगा पूल ट्यूसडे तो जाना पड़ता है रे। ट्यूसडे अगर स्किप किया ना तो बवाल हो जाएगा। पर देखते, अगर बारिश को गिर गई मेरे जीवन में, नसीब का थोड़ा सा वो हो गया Lend me your strength. सीन, तो मजा सा आ जाएगा। We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. I'll free you from your chain. ब्रो कैन आई आस्क यू अ पोकेमॉन रिलेटेड क्विज? बिल्कुल पूछो यार। Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? ब्रो इग्नोर, किसने इग्नोर मारा रे बाप? बहुत दिनों के बाद पहुंचा मैं इधर इलीट पे। The enemy situation has changed. Show your courage. Will of preservation. A little something for everyone. फाइनली अब मेरे आंसर का रिप्लाई आया। आपका आंसर क्वेश्चन ही अब आया यार, मैं क्या करूं यार। What a headache.
the blaze. Lance forward. You'll pay for this. Lend me your strength. I'll free you. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I'm on guard. In which Don't mess with region me. gym leaders are not there? Alola. This battle is unavoidable. Lend me your strength. What a who's next? Lance at the ready. Don't mess with me. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Let me tell your और बताएं. Pay for that. Lend me your strength. What a headache. टू 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 टू. अबे कुछ भी दे दो रे, मेरे को तो निकलना है. फायर बूस्ट, लाइटनिंग, ये अच्छा हो सकता है. वेरी गुड. अब जीत गए हो 10 करोड़ रुपए, बट मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं गरीब हूँ. अस ब्रो अस. कोई बात नहीं. अरे 2 और मिल गए. ये लो भाई. चलो आज के लिए इतना बहुत है. अभी बहुत कुछ करना है भाई. स्टोरी बोरी करते हैं आगे थोड़ी. डेली कंप्लीट हो गए हमारे. सभी कैरेक्टर्स दिए ना इन लोगों ने यूज करने के लिए. यूज करो. 20 प्रीमोज निकालते. अरे ओ आपने सुजीत भाई एक बार फिर से डालो ना यार वो कोड यार. ऊपर चला गया रे बाप. ये यार. Burn away. अरे भाई अंदर अंदर कुछ हो जाता है भाई इसमें. ओके यहाँ पे मार Burn दो. away. कैन नॉट चेंज कैरेक्टर. क्या सीन है. और रीमेको का सब एक बताते हैं. अच्छा ये लो भाई. और भाई साहब. अबे इन दोनों का कॉम्बो अलग ही है बे. You won't get away. भाई साहब. What the heck. यार अल्ट तो बनता है गाइस. अल्ट तो बनता है. क्वेश्चन नंबर 2. टेल योर फेवरेट पोकेमॉन. लेजेंडरी पोकेमॉन. लेजेंडरी पोकेमॉन की बात की जाए तो मेरा फेवरेट कौन सा होगा. यार देखो आरसीएस को मैं गिनता नहीं हूँ क्योंकि आरसीएस तो सबका बाप हो जाएगा. तो आई थिंक लूनाला. पता नहीं क्यों कूल लगता है मेरे को थोड़ा सा. Leave it to me. Naughty child. भाई साहब ये क्या मारा इसने. पागल है क्या अंकल जी. I've no interest in nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. अल्ट्रा नेक्रोजमा मेरा है क्या भाई. एक 47 ले लो. आज एग्जाम को हराम करने गा रहे हैं. क्या बोल रहे हो. The truth of life is sanctuary is but a vision. आरसीएस मिथिकल है लेजेंडरी नहीं. क्या बात कर रहे हो. ऐसा है. ठीक है यार. Fighting is meaningless. Leave it to me.
लूनाला पर्पल और मेरे फेवरेट गेम का मैस्कॉट भी है। मेरे मतलब खत्म। अच्छा एग्जाम खत्म हो गए, नाइस। भाई अच्छा खासा डैमेज देता है ये अंकल जी तो भाई। Stand down. Naughty child. No interest in combat. Let's begin. Time for a shot. Now. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. ओ भाई कूल है बे अंकल जी तो एकदम। इस आदमी को अभी तक नहीं पता आरसीएस मिथिकल है। पोकेमॉन गेम्स मत खेल तू भाई। अरे यार मैंने कभी जिंदगी में ये सब ध्यान नहीं दिया भाई, कौन मिथिकल है और कौन वो है लेजेंडरी है भाई, वो सब भाई सब अच्छे ही है भाई यार, क्या ही सीन है उसमें। Show your courage. Move carefully. अरे गलती से क्यों दब गया रे बाबा। Lend me your strength. Now. Too late to repent. You'll pay for this. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. The truth of life is sanctuary. It's but a vision. ओ भाई 43। नेम मिथिकल पोकेमॉन इन कैंटो रीजन, नहीं पता है रे बाबा। आर्लन दिया, डानहंग दिया, ओके। I'm with you. The initiative. ये मुक्का मारता है मेरा भाई नजदीक जाके। Move carefully. भाई भाई Hope you're prepared. नहीं पता है तो नहीं पता है भाई, उसमें क्या भाई। In the name of land, a will forged in ice never falters. ओ भाई शील्ड तो है। Lesson. मेरा भाई क्या करता है? और फेंड दी Is that all you got? भाई, जिंदगी में पहली बार आर्लन यूज किया भाई। अरे भाई साहब अच्छा है अच्छा है। This and truth of life is sanctuary. It's but a vision. जीरो पे मैं कैसे ई मार रहा हूँ? Too late What? to repent. जीरो टेक्निक पॉइंट्स पे मैंने ई मारा है। ये क्या सीन था भाई? आर्लन मारता है क्या? आर्लन ही मारता है लगता, पता नहीं। In the name of land, a will forged in ice never falters. Fighting is meaningless. और बताओ। एक क्लेरा यूज करनी थी जीवन में एक बार। पूरा पीछे बंदा बुलाती है एक मारने के लिए। टिंग्यून दे दी बे, नाइस वन। भाई साहब भाई ये मार देगा सबको भाई, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वरोग मार देगा भाई। भाई साहब मस्त है बे। तू एक काम कर, खुद को ही कर ले भाई। खत्म भाई, इजी।
यानशिंग यानशिंग का क्या सीन है? यानशिंग क्या करता है? आइस डैमेज, अल्टीमेट इंक्रीजेस क्रिट रेट एंड आइस डैमेज। ओके We're in trouble now. How many can you block? Blade and flip. ओ भाई Here. Practice is over. Swords descend. हाँ? Welcome, customers. ओके Enemy. Strike with heart. ओ भाई Running into me. ब्रो क्या बंदा है ये? Tall. Try that again. Time for swordplay. 1,000 wonders. अरे भाई इसको दे दी रे अल्ट। This awesome move. कट कर देना, कट कर देना। Seize the moment. Yeah. Strike with heart. बाइलू बाइलू तो हम यूज करते ही है, इसका तो कोई सीन नहीं है। हुक और डानहंग दी अच्छा। A little something for everyone. टू 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 टू। Let me tend your wounds. You could still surrender. Here I come. I've no interest in combat. दा 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 दा। भाई बहुत टाइम हो गया ना इसको यूज करते हुए। You could still surrender. Need a doctor? Fighting is meaningless. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. बूम। You don't look so good. खत्म। इसका भी ट्रायल यूज करते हैं। आफ्टर एचपी इज लोअर्ड सेवरल टाइम ऑटोमेटिकली डील डैमेज टू एन एनिमी इज कंज्यूम एचपी टू यूज पावरफुल एबिलिटीज। अच्छा Pray. स्किल क्या है? कंज्यूम्स एचपी टू एनहांस बेसिक अटैक एंड दिस टर्न डज नॉट एंड आफ्टर दिस स्किल इज यूज्ड। सेट करंट एचपी टू 50% ऑफ मैक्स मैसिव विंडो। ओके Do we still have स्किल पनिशमेंट दिया, अभी तो मैं स्किल ही मारूंगा। ये ले enemy data secure? Net markers activate. Time for a good old counterattack. Time for a shot. A blade knows no mercy. The fight is set. Too little. मर मत जाना भाई। Failed to stand. अरे भाई साहब Savor it for me. हाँ क्या बंदा है ये? Naughty child. Thanks for I the will support. dispatch you. We have the upper hand. 22,000 Time for a shot. Now. A blade knows no mercy. भाई साहब। भाई ओपी है भाई ब्लेड तो। पुल करो क्या मेरे भाई को? We're in the way.
consume a portion of HP till lightning damage in a single enemy deals massive lightning damage. Okay. भाई अभी ही मार दोगे क्या? जीने दो मेरे भाई को. Is that all you got? Let me pay you back tenfold. Oh, 40,000. Okay. You can't run. Seize the moment. Try that again. 1,001. इसको अरे फिर से इसको दे दी रे बाबा. Pay you back tenfold. Gotta try hard. Watch this awesome move. Here. Seize the moment. नताशा तो यार इजी है बे. ओ इतना बड़ा अंकल दे दिया नताशा के लिए. Move carefully. ये वाला ट्रैवलर बहुत दिन हो गया बे यूज करने के लिए. Fighting is meaningless. Let's make it quick. That's better. Don't worry about me. The truth of life is but a vision. नाइस. That'll take more than that. Are made to be broken. रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन. खत्म कर दिया रे बाप. मेरे को तो हील करने का ही चांस नहीं मिला. लॉल ड्यूड. शुशैंग लेट्स गो. या सुशांत का भी पता है यार. Take this. Surprise Venus. Now, you want to see what I can do? Stop this. Let's go. That'll take. Let me through. That'll take more than that. Are made to be broken. नाइस. लेट्स गो स्टोरी क्रे. स्टोरी किधर से करते हैं? इधर से ना. या द स्टॉर्म कम्स इन द एडिशन शिप कमीशन एंड द शॉर्टकट आल्सो ओपन्स अप. वी शुड पास थ्रू हियर एज पर द जनरल्स रिकमेंडेशन एंड हेड टू द अल्केमी कमीशन. अच्छा मेरे को इधर जाना है. मैं जाऊं किधर से? इधर से. लेट्स गो. डानहंग मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे को? बहुत दिनों हो गए यार स्टोरी किए हुए. भूल गया मैं तो पूरा क्या सीन चल रहा था इधर.
Oh, looks like the battle here was intense. The Master Diviner must have launched the campaign while we were delayed in the Artisanship Commission. She must have divined it was the right time. I can't imagine Fu Xiang obeying orders to the world. Time is of the essence. The most important task for the Xianzhou Law Fu is suppressing the Stellaron. General Jing Yuan tasked the Master Diviner with commanding the Cloud Knights. He would have known she'd act on the results of her divination. Thank goodness the general didn't make us go with the knights. Fighting is totally different from adventuring. All these people, it's tough to bear. भाई मार्च तेरे I'm को क्या हो afraid गया भाई this is इतना? nothing, benefactor. Centuries ago, an emanator of abundance besieged the Lafu with the aim of taking the ambrosial arbor. They destroyed half our delves and killed most of the Cloud Knights. For long-life species, such events are more like yesterday's memories than ancient history. This awful spectacle is child's play in comparison. Hey, is that supposed to make us feel better? It's hard to tell if the Master Diviner won or lost here. I think she won total victory. Seems to me her troops were wiped out. Let's play it safe and say it was a draw. Hey, whose side are you on? I can't see many Cloud Knights. The Xianzhou must have fought well. Not necessarily. There'd usually be a base with supporting forces set up after a successful engagement, but we don't see any of that. Let's look around and see if we can find some clues. Be careful. Those monsters are pretty tough. आ गया डरते ही हैं. कुछ है क्या इधर? ओ चेस्ट है भाई चेस्ट है. और तो कुछ नहीं है. ऊपर से ही आऊंगा पर. Look, there's someone over there. Hey guys, what's happening? Here, there are still survivors here. Hey वेल्ट ये क्या आवाज निकल रहा है भाई? You're not the knights. What is your purpose here? It's dangerous. We're reinforcements sent by the General. Where's everyone else? Resorting to short-lived species as reinforcements. Jing Yuan is truly running out of options. भाई हल्के में ले रही है क्या तू? Run! She's a disciple of Sanctus Medicus! हल्के में ले रही बे ये. Silence. If my healing worked, you'll become one of us. And then it's not just me they'll be running from. Hurry! Leave here! I can't control myself anymore! हल्की सी शर्म है आंटी जी. So you are afraid of it? I'm on guard. Lend me your strength. What a head put. Let me pet your The lives of short-lived अरे species are so कुत्ते भेज दिए मेरे पीछे. Why seek death? वेट व्हाट? एक और कुत्ता बुला लिया. एक और कुत्ता बुला लिया. कुत्ते पे कुत्ते बुला रहे बे. क्या सीन है? the storm. To guard and defend. Crush them. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. ये क्या करके गया? कुत्ता हाउ करके गया बे.
I'll end your misery. Who's next? Lance ablaze. Lance. सबकी शील्ड तोड़ूंगा. You don't look so good. You'll pay for lend me your strength. I'll end your misery. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Why did you come to the अरे Joe? और To बाकी seek है. immortality? You don't have to appease Jingwen. The disciples of Sanctus Medicus can provide all that you desire. It's time. भाई साहब कुछ अलग ही सीन चल रहा है बे. This battle is unavoidable. Lend me your strength. What a headache. I'll end your misery. एक्शन एडवांस करके जाता है वो मरते मरते. वाह. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? I'll end your misery. Need a doctor? You'll pay for this. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. ओ ऐसे ही मर गया. लॉल. Hold on. We'll find someone to help. Don't waste your time. They've converted me. I don't have much longer. भाई ये लोग नाइट्स को ऐसे कन्वर्ट कर देते बे. Master Diviner's troops are ahead. He stopped talking. It could be because he is exhausted or he is waiting for you to leave him by. Let's go. आ गया. The disciples of Sanctus Medicus were in hiding for so long. Now they finally show their face. Did the Master Diviner fail to foresee this? Be careful, benefactors. The disciples of Sanctus Medicus worship Yaoshik, the Plague's author, the greatest enemy of the Xianzhou. The Alliance has been trying to root out their secret organization for millennia. It's no coincidence that they've chosen this moment to reveal themselves. चुपचाप से नताशा को निकालते पे. इसका हील कम है. नताशा वुड बी बेटर. अबे ये कुत्ते खतरनाक है बे इनके. I'll free you. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Lance at the ready. This battle is unavoidable. Lend me your strength. What a headache. I'll end your misery. Reach the end of the story in your own way. There it is. किधर देख लिया. अरे भाई इधर से किधर से देख लिया भाई तूने. Don't mess with me. It's time. Lance ablaze. Lance. हाय ब्रो. लेविक गेमिंग वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सएप क्या हाल चाल. You'll pay for this. Lend me your strength. What a headache. रिबर्थ करेगा यार. I'll free you from your chains. क्या ये वन हिट होगा. क्रिट मार दे यार. Illusions of the past. नाइस वन. नाइस वन. लेट्स गो. ओ भाई इधर कुछ चल रहा है बे. इधर क्या सीन है. मैं जो तोड़ने जा रहा था वो किधर आ रही है. इधर क्या है. इधर देखते हुए ये क्या है. ओके चेस्ट टेक. Don't mess with me.
हाँ भाई, दो और बुला लो यार, तुम लोग एक काम करो यार। Time for a shot. टू टू टू। Lend me your strength. What a headache. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. हाँ ये क्रिट मारा, नाइस। Don't mess with भाई me. पास आके काटता है भाई ये तो। Lend me your strength. Who's next? अरे मेरे को लगा मर जाएगा यार वो। I'm on guard. Naughty child. What a headache. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Lend me your strength. Don't. Land some अरे dirt. भाई साहब, Time for a shot. क्या एचपी खाई है भाई इसकी। Nap time. This battle is Ouch. unavoidable. What a headache. अरे और बाकी थे अभी, लॉल। Troublesome. I'll free you from your chains. Disappear. हील among कर the लेता sea यार of इससे अच्छा तो मैं। butterflies. Illusions of the past. Who's next? Just a little something. उसको हील कर लेना था, मेरे को लगा खत्म हो रहा है। You'll pay for this. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Don't mess with me. I'll end your misery. Troublesome. I'll free you from disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. अरे अभी भाई और था यार। Next. ओके Time for a shot. हाँ भाई, तू रह गया था, तू एक और बुला ले। This battle is unavoidable. There's always a weakness. इसका इलेक्ट्रो डैमेज बहुत पड़ता है रे। What a headache. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Naughty child. Just a little something. Think happiness. Nap time. You'll pay for this. Lend me your strength. Don't mess with me. I'll end your misery. Troublesome. What a headache. We've entered the storm. ब्रो प्लीज प्ले पोकेमॉन क्वेट्जल। हाँ क्या नहीं आई है क्या? देखेंगे यार, वो भी देखेंगे। अभी तो फायर एस चल रहा है, खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा लगता है। Don't mess with me. भाई साहब मस्ती मस्ती में कुछ A delicate operation. ज्यादा ही हार्ड बैटल होगी बे। मेरे पूरा इधर है यार, ये जाके आऊं क्या? जाके आते बे। चेस्ट पड़ा था यार। इधर एक ये भी था, और बंदे बे। ओ भाई क्या एनिमेशन डाला इन लोगों ने, मजा सा आ गया। ओ ये क्या चल रहा है इधर? लॉल ड्यूट। The disciples of Saint Tismeticus were in hiding for so long. Now they finally show their face. Did the Master Diviner fail to foresee this? चेस्ट दिला मेरे को, चेस्ट दिला। लेट्स गो।
साहब, इतना ज्यादा मैं एक आर्टिफैक्ट के लिए लड़ा यार, शीश। ये तो स्कैम है बे। इनका लेवल कितना है? 80 लेवल है। भाई चेस्ट तो अच्छे खासे दे दिए इन लोगों ने। भाई ऐसे जंप स्केयर मत दिया करो यार। What a headache. ब्रो फेवरेट पोकेमॉन ग्रेनिंजा। Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Troublesome. भाई पूरा टप्पी खा खा के लगता है बे ये तो। क्या सीन है? Battle is unavoidable. Lend me your strength. I'll end your misery. I'm on guard. Naughty child. Lend me your strength. Don't mess with me. मल्टीपल टारगेट्स को लगता है। ठीक है ठीक है, A sharp scythe needs targets. हिल दे दो। एक है पजल एक। अबे इसने देख लिया। It's time. Lance ablaze! Lance forward! Time for a shot. Now, lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. What a headache. Guard and defend. Crush them. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I'll end your misery. खत्म। अभी कौन सा एनिमे देख रहे हो? अभी रनिंग में तो होरीमिया और जुजुत्सु काइसेन और मुसोकु टेंसेई, ये सब जो अभी रनिंग में चल रहे हैं वही देख रहा हूँ। टू, 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 टू। ये सीन है। चोर। वाह भाई, ये अच्छा किया बे। अंदर से चेस्ट आता है पूरा। लॉल। अबे यार आर्टिफैक्ट क्यों दे रहे मेरे को यार? नहीं चाहिए भाई। प्रीमोस दे दो यार। जेड दे दो भाई थोड़े से। नीचे क्या है? ओ भाई पूरा रास्ता ही है क्या इधर? चेस्ट वेस्ट होना चाहिए यार कुछ तो। नहीं है? चेस्ट ही नहीं है इधर। व्हाट द हेक? पूरा रास्ता ही है सिर्फ ओपन। लेट्स गो। स्टोरी में ही आगे बढ़ते तो फिर। लेट्स गो लेट्स गो। Who goes there? Show yourselves! हम हैं। It's you. Quickly, in here. It's dangerous outside. You डरते नहीं है हम, recognize us? डरते नहीं है। Are you not the general's guests? The Master Diviner prophesized your arrival. सबको मार We मार were के आए ordered to बे, wait for डरते you थोड़ी under ना है। any circumstances. Fushang was here. Yes, the Master Diviner ordered us to remain stationed here and went to scout ahead. They're saying the disciples of Sanctus Medicus have returned. They haven't been seen for an age. The troops are anxious. It's good that you're here. The Master Diviner said the Knights weren't to move out until you arrived. Please wait in the camp.
We'll decide on our next steps once the Master Diviner returns. अच्छा वो कब आएगी और That the Cloud Knights received orders not to advance is a bad sign. The Disciples of Sanctus Medicus. I've heard the name before. If memory serves, they're an underground sect of the Abundance that's said to have lain dormant within the Xianzhou, plotting to overthrow the Alliance. The Stellaron has certainly caused Abundance-like abnormalities. Is that what motivated the Disciples to come out of the shadows? No. The Knight's main force remains intact. Something must have happened. Something we're not aware of. The Master Diviner isn't here. Let's head into camp and see what we can learn from the troops here. Good idea. Why don't you take a look around, benefactors? My feet need a rest. बहुत थक जाती बे ये तो जल्दी जल्दी थक जाती एकदम That's what she said. कुछ नहीं बोला मैं इग्नोर मारना जस्ट सेइंग ये क्या कर रहा है इधर ये मार क्यों नहीं रहा हेलो गेट कीपर बना के रख दिया बे तेरे को ऑन ड्यूटी क्लाउड नाइट ओके there is a ghastly paleness in the face of this resident Cloud Knight. As you approach him, he nods his head in salute. Forgive me for being brief. Warfare is a dangerous business. There's no time for idle chat. How's the We took situation? over this place a few hours ago under the Master Diviner's command. It was only afterwards that we learned our enemies were none other than the disciples of Sanctus Medicus, those who worship the plague's author. Everything was going as planned. The sorcerers of the disciples and the fantastic creatures they commanded were no match for us. Then, after a while, our comrades suddenly started to slaughter one another. They become Marastuck. Those monsters. There is a wounded warrior that didn't make it back on his unit. Curse it. What Sanctus Medicus sorcery did they use on us? The greatest भाई इनको fear of रोकना the तो पड़ेगा Xianzhou यार people is ये लोग succumbing to पागल है the भाई एक dark नंबर form के around others. To do so means that we have given up on being human, lost the abomination sleeping in our immortal blood, and violated the Rainbow's admonishments. What the disciples of Sanctus Medicus did are despicable acts that every Alliance resident detests. I swear to the Arbiter that I will avenge my comrades. ये विना बात ये लोग क्या कर रहे और कुछ है क्या इधर कुरियर पैकेज ये क्या था मैंने पढ़ा नहीं पर कुछ तो हुआ लगता है गिर गई वो captured disciple. A Cloud Knight is standing next to the captive. He steps aside after you explain your identity and show him the general's order. You want to ask questions? Fine. But I must be present the whole way through. हाँ भाई तू इधर ही रह This भाई part needs to be recorded as testimony. ठीक है भाई इधर ही रह भाई Finally, someone to talk to. These Cloud Knights are so serious, so boring. भाई इन लोगों का एटीट्यूड तो देखो तुम लोग मतलब पकड़ के रखा है about Stellaron. That shining seed? I've seen it. So beautiful. If you gaze into it, there's a voice inside that speaks to you. बात तो है यार Do you still remember Cocolia? obviously भाई The Master said we could inject new life into the ambrosial arbor with it. I didn't believe it at first. We tried many methods, spending multiple lifetimes of short-life species, yet the arbor showed no signs of resurrection. But look upon it now. Only the power of an eon can recreate the miracle. Yes, the mighty Sanctus Medicus,
The abundance! About the ambrosial arbor. So, you witnessed it too? The ambrosial arbor's resurrection! Magnificent! In the Befall era, so far in the past that even long-lived species cannot recall, Sanctus Medicus the Abundance gifted the ambrosial arbor to the Xianzhou Luofu. With that sacred tree, humanity realized many miracles. The fallow earth, the western soapberry, the altered flesh. But that devilish archer ruined everything. They twisted right and wrong and erased Sanctus Medicus's achievements. But soon we will return to the glory of the Befall era. आ गया. You've seen the fantastic creatures that fought with us. They are only minor gifts of the ambrosial arbor. Shut it, rambling rodent. The Cloud Knights will root all of you out soon. What did you do to this Cloud Knight? What did we do? We cured our kin. It must hurt to be trapped in such weak flesh and blood. You scum! If the Order allowed, I would cut you down now. Oh, you don't understand. A short-lived species couldn't understand. Mara struck? Bah! It's a second life gifted by Sanctus Medicus. To eliminate the self, to achieve transcendence, a life of true freedom. You wanna play Minecraft also? Future में कभी try करेंगे. This life is अभी too तो नहीं. short for you, isn't it? I can help you. अच्छा. Don't listen. His words are poison. We're just having fun, sir. Without the blessing of the abundance, you short-lived species would never be able to endure the transformation. Master Diviner, you're back. ए फूशांग आएगी भी वापस. I have kept you waiting, but the deceit of the disciples is laid bare to me now. You kept us waiting, all right. Why didn't you tell us about the disciples of Sanctus Medicus earlier? Please tell us the whole truth this time. Yeah, man. Apologies. To avoid dissemination of intelligence, the General and I kept the involvement of the disciples to ourselves. It is a clandestine organization that seeks to भाई कितनी overthrow the मेहनत पड़ी पता है उन लोगों का सच जानने में मेरे Before को. the Stellaron disaster, the disciples have remained veiled in shadow for years. Their emergence reflects their intricate connection to this calamity. The conflict is difficult, Master Diviner, but you have led your forces from the front lines and beyond in pursuit of the enemy. Admirable work. Hardly. भाई अभी यार ये टाइम The नहीं है यार Diviner एक must दूसरे की acquire first-hand तारीफ knowledge in करने order to का अंकल calculate जी. the future. Collecting intelligence in this way assists me in achieving the right answer. Wait, what's all this about a difficult conflict? The disciples of Sanctus Medicus have been scheming for a long time, but our army is in no way inferior. How can things be so difficult? Is this a sake into us joining the fray? Just ask for our help already. Sharp as always. Obviously, bhai. I knew we'd spent too long around the Master Diviner. Now we're predicting the future. Let me guess. What are we up to this time? Could it be heading to the front lines? Leading the Cloud Knight charge? Well, try this on for size. Nope! I can't stand any more of this fighting. So there. Who said you'd be heading to the battlefield? We're not? Jing Yuan's orders. He said that the value of unexpected guests lies in the unexpected. The Cloud Knight's assault was to demonstrate our power to the enemy head-on. Now it is time for the unexpected. Please, come with me. इधर ले जा रही भाई क्या बोल रही कुछ समझ में नहीं आया भाई.
After receiving the Ambrosial Arbor, the Alchemy Commission was once the Luofu's most vital commission. After all, it was they who changed the Xianzhou natives into long-life species. But in the end, the alchemists grew discontented and began to obsess over the manipulation of life. Research into the Arbor poisoned their minds. The more they pursued it. Morning bells chime in a dream. Evening mist gathers around me. ये तो जेड जैसा है You see यार that? गेंशिन में हुआ है ना What huge elixir crucibles. There's still smoke coming out of them. This is where the alchemists practiced the way of immortality in ancient times. They erected elixir crucibles here to absorb the power of the Arbor, turning fantasy into reality. Since the smoke from the crucibles never ceases, this place was named Eve Mist Mansion. An elegant name, but as far as the art of war is concerned, it's a death trap. ब्रो ये मल्टीप्लेयर गेम है Crucibles are lit and the smoke नॉट continues येट to linger. बट आई थिंक We cannot करेंगे ये get लोग any बाद closer. में गेंशिन की तरह This गेंशिन is पता है why क्या the आपको Cloud Knights गेंशिन lost इम्पैक्ट control and became Mara struck? Indeed. The अभी तो disciples of स्टोरी Sanctus मोड गेम ही है Medicus infuse the मल्टीप्लेयर इन smoke लोगों ने that डाला नहीं है permeates this delve with medicinal pellets that elicit Mara. Unless the Cloud Knights were able to march with their breath held, they would be doomed to fall into disarray. Moreover, no one can know whether their comrade was about to be stricken with Mara. Is there anything better than fear for destroying the morale of an army? The Cloud Knights' first assault was just a cover. You're using the main army to attract the enemy's attention, while we douse the elixir crucibles and stop the smoke. The disciples of Sanctus Medicus renounced their century of secrecy and chose to reveal themselves, meaning they feel confident of victory. But no matter how well prepared they may be, their focus has always been the Cloud Knights. They are completely unaware of your existence and capacity, and in short, cannot be prepared against you. this smoke can't affect us why not get the Foxians and Vidyadhara to try Indeed, this demonic vapor is a weapon targeted against the Cloud Knights. अच्छा जी सिर्फ क्लाउड नाइट को The ही अफेक्ट Ambrosial करता Arbor है is अरे taboo क्लाउड for the नाइट Luofu, and the Xianzhou alliance has always been fiercely independent. The disciples of Sanctus Medicus could never have guessed that the general would seek outside help. They won't be prepared against short-life species. Is this what कोई सा General मल्टीप्लेयर Jing गेम Yuan खेलो meant जिसमें by आपके unexpected सब्सक्राइबर भी gifts? आपके साथ खेल सके हाँ क्या I wouldn't hazard a guess. All I can say is that the predictions of Try the करेंगे, Valorant try hunters करेंगे। were more accurate than mine. The future that KAFKA seeks is becoming reality. One step at a time. पोकेमॉन यूनाइट खेलेंगे भाई कोई किस दिन मजा आएगा वैसे मल्टीप्लेयर में एक वैलोरेंट भी है जो मैं खेलता हूँ और आई डोंट थिंक कि सब लोग खेलते होंगे आई डोंट वांट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेडिक्शंस दिस इज द ओनली वे I do not wish to be their puppet either. In any case, we do not walk alone and unhindered on our paths. सॉरी ब्रो आई वाज Our ऑफलाइन choices अरे उसमें क्या define सॉरी us भाई कोई and बात नहीं influence यार others. और बताओ भाई The duty of क्या the हाल Master चाल Designer is to bring luck and avoid misfortune. I don't want my choice to plunge the Luofu into a terrible future. To return to the matter at hand, only you can douse the elixir crucibles without being harmed by them. What say you? Fine. I didn't hear. लेकिन 5 मिनट मुझे जाना पड़ेगा सम के लिए हैं सम के लिए मतलब powers around here. Mr. Yang, what do you think? सोने के लिए अच्छा I will कोई come बात नहीं once यार when the smoke dissipates. You won't be left to fend for yourselves. टर्न ऑफ द 3 स्मॉल इलिक्सिल क्रूशिबल हाँ क्या ऐसा करना है मेरे को Huh. ठीक है I feel like even though long life species get to live forever,
ऑटो They करेक्ट की aren't तो so different from us short life species when it comes to worries and suffering. लड़ाई होने वाली बहुत भयंकर लग रहा है। अरे वाह। Oh, wait, Miss Ting-Yun! Why are you still here? You're too close to the crucible. अरे हाँ, उसको तो Thank you अफेक्ट for the होगा। concern, but I'm fine. The general commanded me to stay with you. I dare not go against military orders. Your life is more important, Miss Ting-Yun. Go back. We can explain to the general. Bro, do you have any, you There's know? really no हैं? need. I've spent my मतलब years traveling the universe. Not to mention, I'm younger and stronger than I look. Even you benefactors have probably lived longer than me. do. Investigate. Stop shaking as smoke slowly ceases to pour out. Seems like the Oh. smoke is getting thinner. Not thin enough. We need to hurry. Don't mess with me. अरे भाई भाई भाई, ये लोग आ गए। Lance at the ready. ये लोग बहुत परेशान करते हैं भाई। Lend me your strength. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I'm on guard. Naughty child. There's always a weakness. Lend me your strength. Who's next? I'll end your misery. मरते मरते बहुत डैमेज दे के जाते हैं लोग। बोल दो Reach the है end क्या of the बोलूं पर। story in your own way. ब्रो डू यू हैव एनी यू नो, मतलब इसका मतलब क्या, मेरे को वो बताओ पहले, क्या कहना क्या चाहते हो आप। जीएफ, अच्छा जीएफ तो अभी तो नहीं है यार। What a headache. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. मेरे पास है हाँ क्या, कांग्रेचुलेशंस ड्यूड। टू 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 टू। Now, you'll pay. Lend me your strength. Don't mess with me. कसम है मेरे पास हाँ क्या। नाइस सुन यार, मैंने कब मना किया यार। Lance ablaze. Lance forward. Naughty child. This battle is unavoidable. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Don't mess with me. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. वो भी 3 हाँ क्या, 3-3, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। You'll pay for this. Lend me your strength. जीएफ तो एक ही होनी चाहिए भाई, 3-3 क्या भाई। ये गलत है। Reach the end of the डोंट टेल मी story कि in सपने your में आप own बात way. लेकिन ऑनलाइन गेम में अगर उसने मेरे को देख लिया तो वो मेरे ऊपर थूक के जाएगी। हाँ क्या, ऐसा थोड़ी होता है भाई। Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. It's time. Time for a shot. Now. Lend me your strength. मतलब ऑनलाइन में है, ठीक ठीक। अगर देख लिया रियल लाइफ में तो। Who's next? I'll end your misery.
रियल लाइफ में बनाओ भाई, ऑनलाइन पे भरोसा मत करो, लड़का निकलेगा भाई, बता रहा हूँ। माय एज इज 12। हाँ क्या इतने छोटे और 3-3 लड़कियां गर्लफ्रेंड बना के घूमते हो? हाँ चलो एक और बंद कर दिया, एक बाकी है सिर्फ। Yay, we did it! Can't see the smoke anymore. तीनों बंद कर दिए मैंने। Excellent. I'll lead my troops to the rendezvous. फूशवांग को क्या हो गया भाई, ये कैसा आवाज निकाल रही है? नहीं भाई, किडिंग, आई डोंट हैव। ठीक है यार। हे, भाई आंटी जी तो देखो। So, you succeeded in dousing the elixir cauldrons. भाई मेन बैटल होने वाली लग रहा है। Unimportant. अरे भाई साहब क्या कैरेक्टर डिजाइन है, शीश। Danshu. It's you. कौन है भाई डांशु, कौन है भाई? I met you before in my capacity as chief alchemist, master diviner. You don't seem surprised. Indeed. The General and I knew that the disciples of Sanctus Medicus must be hiding in the Alchemy Commission. However, without evidence, we couldn't bring charges before the commissions. We had to wait for you to show yourselves. And now, your charges are many. Drawing Stellaron spirits into the Xianzhou, resurrecting the Ambrosial Arbor, striking down our people with Mara. The Ten Lords Commission will address these transgressions during your reckoning. Crimes? If I am guilty, then all of our Xianzhou ancestors are also guilty. They were the ones who accepted the blessings of the abundance and turned their descendants into long-life species. The disciples of Sanctus Medicus are only walking on the road our ancestors once took. How is it a crime to seek ascendance? In days of old, the roots of the Ambrosial Arbor enveloped the Xianzhou Lafu like a living creature. We controlled the stellar seas, and none could stand in our way. Everyone could become celestial and shift form at will. Divine miracles descended onto all 9 Xianzhou ships. What a glorious time that was. How far the Xianzhou has fallen. We consent to be commanded by the devilish archer. Suffer continuously at the hands of the denizens of abundance. And the Ten Lords Commission even forces us to give up our immortality. How pitiful. I do not blame you for your ignorance. We were not born in the era when the Ambrosial Arbor first descended. Nor did we witness its miracles. But now, we now have an opportunity to restore the ancient laws. Forgive me for thinking you might have harbored some profound enlightenment. Yours is the same old talk of those who seek power and give up on their humanity. Our Xianzhou ancestors fought side by side with the Arbiter, laid waste to the Arbor, and established the Ten Lords Commission to lay down the lines between life and death. In doing so, we enshrined our future as human beings. Celestials? There are no Celestials on the Xianzhou. The divine miracles of the abundance, the manipulation of life and death. Your deeds are nothing but evil. I have nothing to say to you, Master Diviner. You have already made your decision. You have discarded power. A most foolish choice. Master Diviner, allow me to show you what the Celestials were capable of. Okay. मैं अल्ट क्यों नहीं यूज कर पा रहा भाई? अच्छा अभी की भाई, ये क्या सीन था भाई?
We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Lend me your strength. भाई भाई What a headache. I'll end your misery. Who's next? I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. यार ये ऐसे टाइम पे क्रिट नहीं मारेगी यार. Just a little something. Naughty child. No. Then you are afraid of me. I'll end your misery. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Who's next? Lance at the ready. आई आंटी जी आई आंटी जी. यार अल्ट मारनी थी पहले. To guard and defend. Crush them. I'll free you from your chains. भाई क्या वन हिट कर देगी सीला? प्लीज वन हिट कर देना यार. Illusions of the past. नाइस वन. I'll end your misery. You'll pay for this. Lend me your strength. To my heart's content. चापा ये क्या है बे? अबे ये क्या कर दिया इसने? No. Don't mess with me. अरे भाई साहब. This battle is unavoidable. ओ मेरी एचपी इतनी कम कर दी क्या इसने? Time for a shot. आंटी जी तो खतरनाक है यार. स्किल पॉइंट भी खा रही क्या बैठे बैठे मेरे? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I'm on guard. Just a little something. Lance ablaze. Lance forward. No. फिर से खा ली मेरी एचपी. You'll pay for this. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. नाइस वन. Lance at the ready. अरे भाई साहब. Just a little something. भाई क्या डैमेज दे रही है? खतरनाक है यार. Who's next? This battle is unavoidable. Lend me your strength. Entangle me to my heart's content. I'm on guard. Who's next? Naughty child. That's better. Nice teamwork. Punishment. The odd vines and veins. चल यार सीला क्रिट मार दे. खत्म कर इसको. Illusions of the past. क्रिट तो मारा यार. खत्म नहीं हुई पर. Lance ablaze. Lance forward. Lend me your strength. Time for a shot. Don't mess with me. Why? चल निकल पहली फुर्सत में. The ambrosial arbor's descent will bring us undying bodies. The one who gave us the Stellaron said that. किसने दिया था स्टेलरन इनको? Pantilia,
The disciples of Sanctus Medicus have fulfilled our promise. फैंटिलिया कौन है भाई अभी? You, Lord Ravager, must do the same. Now, quickly. Little pawn. Yeah? Must you force me to intervene directly? I'm loath to flout my philosophy of destruction. Never mind. It would seem the time has come for other means of dismantling the Xianzhou from within. Yeah? What a shame. What? It would have been nice to observe for a little longer. You received the gift of abundance. Surely you can withstand the blessing of destruction. What? अच्छा भाई ये possessed थी. Allow me to reintroduce myself. I am Lord Ravager of Antilia. I have come with a single purpose. भाई साहब. The self-destruction of the Xianzhou. Miss Ting-Yun is the Lord Ravager of the Antimatter Legion? But how can that be? Keep calm, all of you. This is a formidable enemy. We have to stay together. भाई ये possessed थी नहीं थी? टिंग्यू नहीं थी वो? ब्रो क्या हुआ अभी भाई? भाई जो भी हुआ एकदम खतरनाक था यार. Lance at the ready. थोड़ा सा ऊपर से निकल गया रे बराबर. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. ब्रो ये क्या ट्विस्ट है भाई? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? Lend me your strength. Don't. I'm okay. Just a little something. I'm on guard. That'll take more than medicine. So you are afraid of me. What a headache. Who's next? Lance ablaze. Lance forward. Now, lend me your strength. Don't mess with me. Who's next? Lance at the ready. I'm fresh. There's always a way. Lend me your strength. Who's next? You are fortunate that Zephyro and Selenova never set their gaze upon the Xianzhou. They have no qualms about dealing out destruction by their own hand. But since that stubborn general of yours has forced me to take center stage, Come on. I'll I make wanna sure try I something. steal the show. My apologies for leaving so soon, but I have an appointment to keep. I'm sure my friends here will be happy to entertain you. भाई कुछ भी था भाई. Naughty child. मजा आ गया बे. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. I'll end your misery. I'll free you. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Lend me your strength. I'm okay. Just a little something. I'm on guard.
Lance ablaze! Lance forward! What a headache. You'll pay. Naughty child. Now. This battle is Don't mess with me. time for a shot. Lance at the ready. You'll pay for this. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. क्रिट मार दे यार सीलर. Here among the sea of butterflies. Illusions of the past. छी भाई. अरे भाई साहब. Who's next? This battle is unavoidable. Lend me your strength. Just a little something. Lance ablaze! Lance forward! Troublesome. What a headache. Lend me your strength. Wait, hold on a second. Are you really saying that Miss Ting-Yun was a member of the Antimatter Legion all along? And what was that fire that came out of her? And her body? Where did it go? हाँ ना. Mr. Yang, you're smart. What happened just now? Mr. Yang. ऐसे आवाज निकालने के लिए नहीं बोला था We भाई. witnessed claimed to be Lord Ravager Fantilia, a name I've heard other nameless speak of in the past. She's one of 7 Lord Ravagers who serve Nanook, and finds pleasure in witnessing the self-destruction of mortals. She's led countless souls down a dark and hopeless path. Meaning that Ting-Yun had long since fallen under the Lord Ravager's influence? I भाई. don't believe so. Fantilia revels in watching a corrupted mind eating away its host from inside out, until the obliteration of both is achieved. But there was no indication that Ting-Yun had been misguided or manipulated. It's possible that the Ting-Yun we knew wasn't her true self, but an image Fantilia devised to serve her own purposes. That is to say, Ting-Yun was possessed. You're saying that the real Ting-Yun is still... I'm sorry, Marge. I can't say with any certainty where the real Ting-Yun may be, or at what point she was replaced by the imposter. Without knowing where the body vanished to, it'll be tough to get an answer. At this point, it's all just conjecture and hope. But if that body belonged to the real Ting-Yun, it does raise the question of why Fantilia would go to such lengths to destroy any evidence of her. Wouldn't it be more in line with her destructive nature to leave Ting-Yun's remains behind as a display of power? I believe this to be Fantilia's goal: to sow seeds of doubt among us and ensnare us in a malevolent trap. It's clear that the sudden resurgence of the disciples of Sanctus Medicus is all connected to the Lord Ravager. Pretending to be a Xianzhou citizen? Planting a Stellaron in the Luofu? All part of her plan to bring about our self-destruction. Fantilia is aiming for the Ambrosial Arbor. If she succeeds, the Luofu will be deprived of its roots, making its destruction all too easy. We must stop her. We need to take a star skiff to Scale Gorge Waterscape. The Ambrosial Arbor can be sealed from that delve. Let's make haste. हेस्ट बेस तो चलता रहेगा. ट्रेजर चेस्ट इज
more important dude. ये क्या है बे? अच्छा KAFKA, yo, hey Naruto, welcome back, what's up? That imposter had the audacity to carry out her nefarious plans right under our noses. How utterly despicable. What worries me more is just how many more antimatter saboteurs are at large. About Tin Young. It all happened so suddenly. But looking back, I think Mr. Yang was right. Ting Yun was behaving strangely. She was fascinated with the Abundance's creations. Since she was an ambassador dispatched by the Skyfaring Commission, it's evident that there must indeed be a person with her name in the commission. भाई क्या ही ट्विस्ट दिखा है ना इन लोगों ने Ting Yun वाला मजा सा आ गया बे. What happened to the real Ting Yun? As for the Ting Yun who accompanied us all that way, it's like what Mr. Yang said. Her appearance was designed to sow seeds of doubt among us. We cannot allow ourselves to fall into her trap. आज से 25 तक फुल मस्त दिन होगा हाँ क्या क्यों? About Skellige Waterscape. It is a delve governed by the Vidyadhara. Supposedly an ancient oceanic region transferred from the Vidyadhara home planet. After the ambrosial arbor was broken in two during the war, its roots were left gnarled and broken. Yet it never died. The Alliance decided to seal the arbor within Scale Gorge Waterscape, entrust it to the High Elders of the Vidyadhara, and rely on the power of long scions to constrain it. It has been so long. No one knows whether the seal remains. Even if it does, I doubt it will hinder that spectral Lord Ravager. Where is Jin Yuan? हाँ ना वो किधर है भाई? Jin Yuan किधर है भाई? He made no further contact after we communicated at the Matrix of Prescience. He said he had important matters to personally attend to. The situation stands on the edge of a precipice. We must trust in the General. Okay. Time is of the essence. Let's go. A little while ago. Oh, अच्छा. Finally. मेरा डानहंग भाई किधर पहुंचा भाई? The Alchemy Commission, the Dell Boarding Skeletor. What is it? Huh? You're pretty familiar with this place. Obviously, भाई ये इधर का ही है भाई. Yep, it's the Alchemy Commission. No wonder we were getting those military broadcasts on the way over. Something about the Cloud Knights gathering here, right? They're probably coming to fix the Stellaron problem. उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई. Long journey. Just saying. Now we're finally gonna meet some Cloud Knights. I'll be back with my unit. I didn't lie to you, right? I told you I'd bring you somewhere safe, and I did. Though we did take a bit of a detour. Before I arrived in Starskiff Haven, I had a diviner read my fortune for the journey ahead. He told me not to be concerned with the destination, but to seize my chances and travel with the current to reap the greatest harvest. Meaning? Meaning, thank you, Miss Sushang. Oh, okay. Well, I'm gonna go report to the nearest captain. You guys can hang around here, but don't run off too far. There'll be Cloud Knights coming to escort you back soon. Bye for now. ठीक है ठीक है. एक मैसेज आया ट्रेलब्लेजर का. The Cloud Knight invited us to go with them. Your homeland got some really big crucible. Cloud Knight? Electric furnace. Message failed to send. ये लो भाई खत्म भाई. The messages never get sent. I wonder what's happening with those three. बात तो है यार. The Cloud Knights seem to be gathering for the Stellaron disaster. But आज पूरा दिन जीएफ के साथ फुल रोमांटिक एनीमे देख रहा था. हाँ क्या? नाइस वन. कौन सा एनीमे देख रहे थे बे? What happened to Blade?
delayed for too long. I need more information. भाई इससे अच्छा तू हमारे साथ ही आ जाता है यार. Leave the healers market on your own. Optional, talk with the people in the market to understand what is happening. My happy marriage, okay. What's up? I need to go. Nothing. Don't worry. Once the fight is over, I'll personally escort you and Mr. Locha home. नहीं जाना भाई होम यार, तू रुक जा यार. कुछ तो सीन चल रहा है बे इधर, तेरे को होम की पड़ी है. You haven't been back home for a long time, have you, Master Dan Heng? This isn't my home. How did you know? Oh, is that so? Apologies. Do you want to leave? Then do it now. और ओशिनो को तो मस्त है. ओशिनो को तो देखा मैंने. I have somewhere else to be. I've tarried here too long. Where are you going? I'm a traveling merchant. I have one more deal to see through. ये लोशा का क्या सीन है वो भी पता नहीं चल रहा ना. Thanks to those heroes, I managed to pull through. I have engaged with her. Ah, yeah, nice one. Congratulations. लगता है निकलना चाहिए इधर से. अच्छा ये तो वही जगह है, इधर तो हम घूम रहे थे कुछ टाइम पहले. Okay, let's go. I'm sorry. I have to catch up to my friends. Thank you for looking out for me on this journey. अबे ये क्या कर रहा है इधर यानशिंग? I need to be careful. If I alert the knights, they might take an interest in me. बात तो है यार. घूम के जाना पड़ेगा. वो आइस सर्जन है. Oh my god. मैं हार्ट सर्जन. Nice one, nice one. What a huge cauldron. Past echo. This aureate cauldron is driven by the cloud hymn magic of our people, the Vidyadhara. It drinks the water of the ancient sea like a whale swallows the tide and refines it into medicinal pellets. इसको क्या हो रहा है बे? Find out where the traveler, trailblazer and others are. Okay. Wait, what? All the elixir crucibles that the Vidyadhara helped to construct contain इसका past है क्या ये? magic. You should take this chance to learn more, young master. But I don't need any sort of device to help me command water. What more is there to learn? काफका की एंट्री होने वाली है क्या? Let's go. Indeed, the chosen one, with endless potential. Yet, cloud hymn magic. यार ये परछाई से तो लग नहीं रहा. डानहंग है यार. डानहंग की हेयरस्टाइल तो अलग है. पता नहीं भाई. Did Yadava and Miraja go? Have these shadows of the past yet to disperse? These memories. No. They have nothing to do with me anymore. डानहंग की है क्या? Wait, what? एक और मेमोरी है. They say that you're Loom's powering hermit. Is that true? और उसके साथ PS5 गेम्स खेला. मोर्टल कॉम्बैट 11. हाँ क्या यार, मोर्टल कॉम्बैट तो मस्त गेम है यार. Long. I was exiled from the Xianzhou. I'm no longer one of the scions of permanence. ओल्ड एल्डर्स ऑफ डानहंग है. ओके. मेरे भाई को निकाल दिया था यार. क्या सीन है? I doubt I will be here to see you take charge.
डानहंग के पूर्वज, हाँ समझ गया। No need to feel aggrieved. Vidyadhara go through cycles of life and death, existing forever in this world. By the time you are the High Elder, my hatching rebirth will be complete, and I will be a child once again. Please take care of me. ये लो भाई, इसको वापस से बच्चा बनना है, क्या सीन है ये? Surging power. It's you. You've returned, High Elder. WWE के 23 भी, हाँ क्या? Something terrible is happening in Scale Gorge Waterscape. Please, don't go any further. Your enemies are waiting for you. Oh. I'm sorry. I cannot linger here. My friends have left. I must find them. You didn't heed us then, and won't heed us now. As headstrong as you always were. Ah, yeah. It seems you already made your decision. There is a vessel bound for Scale Gorge Waterscape, located ahead. Ah, ये कटसीन। भाई इन लोगों ने कटसीन की क्वालिटी नहीं अच्छी की है यार। He's here. ए भाई साहब, ये लो भाई। Right on time. Kafka and Blade. That feeling, Kafka. It's welling up within me. That feeling. It's. Well, don't resist. Let the Mara strike you. कैसे बोलती है ना ये एकदम सीटीसी आवाज में। You're here. Laughing in madness. It's time to pay the price. It's time. एक फनी बात बताओ, यानशिंग चैलेंज डानहंग ड्रैगन फॉर्म एंड ब्लेड। बेचारा। I've told you and that woman many times. I am Dan Hung. इसने क्या बोला? Nothing to do with your past. Dan Hung. भाई ये ब्लेड पूरा पागल है भाई। Another name and face can blot out the sin of your past. You didn't even experience death. I will force this suffering upon you, Dan Hung. You will know the pain of death. Not on my watch. यानशिंग भाई, You're not murdering anyone today, fugitive. आप किधर से टपके भाई? Jin Yuan's lapdog. लैपटॉप बोलता है बेची। Did the general not teach you to choose your battles wisely? बात तो है। देखना अभी आएगा, है ना? Hey, move back. Things are about to. Huh? You look so familiar. हैं जी। Look out! Good hiding. ओ भाई। ये यांगशिंग जॉर्ड। अरे पैर दी। I have news for you, boy. Behind you is none other than the traitor of the Xianzhou. A criminal forever banished. Woo! The High Elder of the Vidyadhara. Imbibed Lunae. जीनियों का फालतू कुत्ता आना। ब्रो एपिक। You really thought the Stellaron
In that case, I'll bring both of you to justice. अरे भाई भाई भाई, मेरा भाई तो थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ गया. I've heard of you and Bibiter Lune. First it was the Stellaron hunters, now an exiled criminal has infiltrated the Xianzhou. Sword, heed me. I have no interest in stoking conflict. I came to ensure the safety of my friends. भाई ये डानहंग को पता था यार उसमें इतनी ज्यादा ताकत है. Out of the way. Do not be afraid. अगर डानहंग को पता था तो कहाँ पे छुपाई रखी थी भाई तूने ये ताकत? हाँ. अरे भाई साहब. Better, but I'm afraid you won't be seeing your friends. They're caught in their own bitter struggle. Silence! You're not getting away either! Is that so? Let's heat things up then. Kafka? Blady, listen to me. Unleash the Mara. So it begins. अरे भाई भाई. भाई यानशिंग तो ताकतवर है पर यार जो भी बोलो, दोनों इतने कमाल के बंदों के साथ वो अकेला लड़ रहा है यार. देख रहे हो ब्रो, यू आर ओपी यार. मार दे, मैं तो बोलता हूँ इसको खत्म करते. Afraid to hurt the boy. Punish evil! I wonder if the others are okay. Gotta make this quick. Don't hold my blade. इमेजिनरी है. अच्छा ये You two just won't give up. I only have one choice. अरे भाई साहब ये क्या मारा? So familiar. Did she teach you? Did she teach you? Mercy. Can't delay any longer. Use the skill to enhance Danhang Imbibitor Lune's basic attack for up to 3 consecutive time. अच्छा. There's no other way. Forgive me. Heaven surge. Forgive me. I failed. Oh! This isn't over. She teach you means Jin Liu All of teach you him. listen to me. अच्छा वो Stop. काफका ने रुका दिया भाई सब Well, कुछ. Blady, are you satisfied? मतलब वो जो उन लोगों ने वीडियो डाला था उसमें जो बंदी थी उसने क्या जिन युआंग को जो वो सिखा रही थी उसका नाम था क्या? ये डानहंग की स्किल थी भाई, खतरनाक थी भाई जो भी बोलो यार. वन हिट कर दिया बे भाई. डानहंग क्या लग रहा है बे? बैड एस. इग्नोर मारा फुल. What did you do? I'm just clearing the stage for the grand entrance. Can't have you three misbehaving in front of the Luofu's hotshot general. जिंग लिu इज मास्टर ऑफ जिन युआंग. हाँ भाई इसको पता था ये है भाई. इधर ये जिन युआंग भाई क्या कर रहे थे आप इतने टाइम तक भाई? Jingyuan. General! भाई अच्छा लड़ा यार यानशिंग भाई, मस्त लड़ा यार तू. रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट. भाई इसके कान एकदम एल्फ जैसे हो गए बे. Many years have passed since the two of you departed the Xianzhou, and yet the circumstances of your return appear to be equally unhappy. If you still thought of me as a friend, you should have forewarned me. My task is complete.
That it is. Thank you for assisting the Xianzhou in this small matter. Take this person away. I will pretend I didn't see anything this time. General, ये सब Now is जनरल not का the प्लान time. था. He said Kafka to bring Dan Heng. It has been a long time, old friend. I'm not him. I'm sorry. You cannot leave yet. Your Astral Express friends are waiting for you in Scale Gorge Waterscape. Shall we go and see them together? भाई जो मजा आया है भाई. Nice one, bे. A realm of singular beauty. Scale Gorge Waterscape is the same as when I last laid eyes on it. And here we stand so different from one another. The flesh of long-life species may be immortal, but the constant of heaven and earth eludes them. You know the Vidyadhara has अभी एक movie type cutscene आएगा हाँ क्या? The waters of the ancient sea have cleansed Dan Feng of his past sin. The person that once stood here alongside you is no more. I am Dan Heng. Whether Dan Feng was hero or villain has nothing to do with me. I bore his punishment, accepted my eternal banishment without complaint. बात तो है यार. Do not let his shadow cloud your estimation of me, General. Raising old nets only darkens the water, an exercise in unhappiness. Perhaps it is your visage, the horns on your head, or the unmistakable air of the High Elder that makes the separation nigh impossible for me. I already told you, You did. But to what effect? If words alone were enough to change the heart, this world would be without quarrel. If you wish to rid me of the illusion of Dan Feng, you must do something for me. Before I can let Dan Feng die and revoke your banishment edict, I need him to do me one final favor. I can guarantee you that when it is done, you will no longer walk in anyone's shadow aboard the Law Fu. Dan Heng Elder has power may to not be control capable water of and the summon things water that dragon Dan spirit. Feng was capable of. You must do it, or my promise will count for naught. If you wish to blame someone, blame your previous incarnation. Had he not committed that terrible sin, had the power of dragon transmutation been passed on intact, I would have no need to compel you. It is as I said. Here we stand so different from one another. Dan Feng is no more. Now, there is only Dan Heng. But I am the general of the Lo Fu. There are things that I wish I did not have to do, and yet I must. Let us talk of happier tidings. क्या बंदा है भाई ये? On the express are here. Do you wish to see them? सब पता है राम की शादी को सब पता है. Yes. They are waiting in the Dragon Vista Rain Hall. Go. Your friends are waiting for you. इसको पहचानेंगे थोड़ी. Impedited और लुने. Okay. ये क्या है? I have been keeping careful watch against the abominations of abundance. The फूफ वन आएगी तो न्यूज़ स्टोरी स्टार्ट होगी. वो कौन है भाई फूफ वन? But I never anticipated the Antimatter Legion. The hunt is far from over,
Yet all the while we find ourselves at war with other evil spirits. From this battle onward, the Alliance must fight the Legion to our dying breath, even if it means the end of the Law Fu. ए तू क्या कर रहा है इधर? Our intelligence tells us that the Legion are a mad and destructive war machine. Yet they never took up arms against the Alliance. The armies of the Seven Ravagers all have their own means of destruction. They are not to be taken lightly. मेरे को इसकी information देखनी पर ये लोग नहीं देखने दे रहे यार. Eternal collapse, which is why she masterminded the Stellaron crisis and urged the disciples of Sanctus Medicus out of the shadows. Now that her plot has been laid bare, she has no choice but to retreat. And yet that hardly suits her philosophy of destruction. There must be something more. Her hatching rebirth is complete. She left me all alone. किसकी बात कर रहा है ये? Still, I wait for the day of my rebirth. Endless waiting. फूशांग जिनयुआंग के साथ पिंग औरत. अच्छा फूशवांग. अच्छा हाँ भाई, मैंने सोचा फूफुआंग कौन है. As recorded in the ancient texts, this body of water was brought by my people from our homeworld. It formed part of the roiling deep. It is as pure here as it was there. Our dragon ancestors nurtured us with the water of life and bestowed us with the permanence of the Vidyadhara. इधर कुछ है क्या? Do you know something? When Don Fong committed his great crime, ये डान फंग ने the क्या Ten किया था Lords बे? Commission advocated strongly for him to be destroyed. The Vidyadhara, on the other hand, were split evenly in their favor and disfavor of the motion. The dragon transmutation inheritance was not intact after all. The senior Vidyadhara hated you, yet did not dare to kill you. The Vidyadhara were under great pressure. In order to placate the 10 lords and skyfaring commissions, they performed an exuviation charm on Don Fong against his will. Still, they ensured that the charm contained a flaw, thinking that this would fool the 10 lords' commission. The senior Vidyadhara were sure of their scheme. But you cannot hide fire with paper. बात तो है यार. इधर एक और अंकल जी खड़े भाई. क्या सीन है? सब लोग अपनी बॉडी का वेट कर रहे हैं. Waters of the ancient sea, protect me. This world's good karma is settled. This life's misfortune is erased. Ah, yeah, Dan Hung is here. Your friends are taking the fight to the Legion as we speak. We need to help them. Let's go. जीन योंग डान हंग 2 दे दिया. अच्छा, ये क्या कोई 3 टाइम करना था ना ये? 1 2 3. अरे भाई साहब, ब्रो क्या कैरेक्टर बनाया इन लोगों ने ये. A foregone conclusion. ज्यादा ही ओवर पावर्ड है बे.
This is our chance. 3 clicks mean 3 different move. हाँ क्या? भाई मस्त है यार, जो भी बोलो यार, मजा सा आ गया मेरे को तो. Follow my charge. Conflict is bliss. I told ya I could fight. Stay right there while I give you a present. Try that again. Rules are made to be broken. स्लो कर दिया बे इन लोगों ने खुद से ही भाई. You're welcome. Strength I wished not to use. Heaven Surge. Now. Let's go. In story last fight you can use Dan Hung ultimate. Oh. Batter up. Here. This thunder. भाई इसका लाइटनिंग लॉर्ड आएगा आज. 7 स्टैक के सब पता नहीं किधर ही घूम रहा है भाई. आजा भाई. You can't run. आया आया आया. ये है ना फास्ट वाला, पता नहीं स्लो क्यों था. ये दूसरा वाला यूज करते हैं पर ये क्या है. ओ भाई ये भी अच्छा है बे. छी 3000 का डैमेज देता है टट्टा. स्पीड मोड ऑन करो. हाँ यार पता नहीं क्यों ऑफ था वो. मेरे को लगा इन लोगों ने कर दिया है पर ऑप्शन तो था यार. I sent a storm. यही मस्त है बे. भाई क्या मारता है भाई, क्या मारता है भाई. Let's make it quick. Rules are made to be broken. Enhance, enhance, enhance. खत्म बे. Jingyuan, where have you been? भाई इसका अलग ही चल रहा था, बता रहा हूँ. Forgive my late arrival, Lady Fu. Lady We Fu. are indebted to you and your forces. The seats of divine foresight relate the battle reports to me. As for Fantilia's plan... The Ambrosial Arbor. That's her focus. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife, then let it consume the Xianzhou from within. She wanted to use the Arbor to disseminate the power of the Plague's Author, and turn the Luofu into a hell of undying abominations. That is clear to me now. Friends of the Astral Express, I have brought someone with me whom I think you'll be eager to see. ये लोग बोल रहे कि ये कौन है बे? हम तो पहचानते ही नहीं इसको भाई. Huh? Is that... हम छोड़ के चले गए. डानहंग को क्या हो गया, ऐसा बोल रहे हो क्या ये? You are done, Hung, right? What's with the horns? मार्च का मुंह देखो बे. It's a long story, March. It's me. मुंह छुके. So मैं ही हूँ ये. you सॉरी यार गलती do से. have secret strength. Let us save such reminiscence for later. किसी दूसरी लैंग्वेज निकल गई भाई मुंह से. Astral guess. वो When you first appeared on the ट्रांसलेटर Luofu, बंद पड़ गया दिमाग का. your stated aim was the resolution of the Stellaron crisis. I was concerned that the Stellaron hunters harbored ulterior motives and refused your offer. I see now that I was overly anxious. Nevertheless, it is true that the motives of the Stellaron hunters were not what they appeared. In order that the Express and the Xianzhou fight side by side, KAFKA lured you here and broadened the scope of the crisis. In doing so, she succeeded in making it clear that your sincerity is beyond doubt.
The Lafu is in your debt, and I have no right to seek further assistance from you. However, as Lady Fu has explained, the appearance of Fantilia means that the situation is far from under our control. As General of the Law Fu, it would be foolish of me not to ask Don Hong and the rest of you for your strength at this critical moment. एक और बात मदद करते हैं, ऐसा Even if बोल the रहा है. crisis on the Law Fu had nothing to do with the Stellaron, I would be willing to help. But I can't speak for the other members of my crew. Explore, understand, establish, and connect. As the crew of the Express, that's the Trailblaze creed we follow. Still, when the journey gets tough, those words can feel far off. Fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. बात तो है यार, क्या मस्त चीज बोला भाई. Able to stay the course, number few indeed. Whether our destination lies before us or behind us, the decision is ours to make. Here, डानहंग ड्रैगन फॉर्म के लिए मैं लाइटकॉन भी पुल करूंगा. हाँ क्या, मैं काफका के लिए लाइटकॉन पुल करने का सोच रहा हूँ. देखते हैं कैसा है लाइटकॉन उसका. Let's go, babe. Danhung? Hold out hand. Remain still. Thank you, Don Hong. कितने पुल सेव किए? How am कितने? I still one of the nameless? 70 plus 4,000 ऐसा I कुछ है. stand here at the mercy of others without true freedom to speak. But as a descendant of the Vidyadhara, I will fulfill my duty to the Law Fu. Great! Everyone's just as heroic as when they arrived. So, what's the master plan, General? There is no master plan. Only a bet. प्लान ये है कि कोई A प्लान नहीं है. bet on the senior Vidyadhara's incomplete exuviation charm. And on Dong Hong's ability to access the memories of the High Elder. High Elder? दिखाना जरा, देखता हूँ यार. When the Rainbow Arbiter severed the Ambrosial Arbor, remnants of the curse of the plague's author lingered. In order to make the stemming of those remnants a possibility, the Law Fu invoked the power of the Scions of Permanence. Under the direction of the High Elder, the Vidyadhara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge waterscape delve and contain the Arbor. To commemorate this magnificent feat and sacrifice, the Alliance erected the Dragon Vista Rain Monument, a Vidyadhara statue. Ah, it looks so much like Don Hong. I wonder if... The statue... Is that... Don Hong's brother? हालात देख लो इसके. I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is, until the current generation. The most recent successor did not inherit the same level of power, and their appearance is that of a child. Do you understand, Don Hong? Since Dong Feng perished, the Law Fu Vidyadhara have no longer had an individual capable of performing such feats. But you, who once kept watch over the Arbor, should be able to open a way through to that great tree. What happens next is in your hands. Okay. Which is 71 plus 4,000. Yes. $25. 71 plus 25.
Upon the visual arbor power of the High Elder, talk enters the hall. You scared the heck out of me. For a second, I thought you'd annoyed the general. It seemed like you were his prisoner. There I was, thinking up a plan to kidnap you. And it turns out the two of you are old buddies. So, what made you suddenly decide to come down from the express? I was worried for your safety. Aw, how sweet. But Mr. Yang and I have been holding our own. We're pretty much Xianzhou heroes at this point. Anyway, it's great to have you with us, Dan Hung. ठीक है। फूशंग कुछ बोल रही क्या? ये भी कुछ बोल रही है। अच्छा, ट्रैवलर किधर है बे? अच्छा, उधर खड़ी है ट्रैवलर तो। ठीक है, सबसे बात करेंगे। Imbibitor Lune's reincarnation. Dong Hong, correct? I've heard your name before. किधर भाई? How can that be? My name was erased. Why would the name of the banished be recorded? Your name was only erased from the public eye. Hope आप और मैं 50-50 विन कर ले on काफका एंड लाइट कोड। मेरा तो गारंटीड है लाइट वो काफका तो सिर्फ लाइट कोड में विन कर लूँ तो अच्छा है। I was not born in the heroic and extraordinary. मैं पीटी बिल्ड कर रहा था सरवाल और वो की और मेरे को ये मिल गई बाइलू। Your appearance closely matches the depiction in the annals. Does Videodora reincarnation really entail a complete transformation? A new life? जिन यांग क्या बोल रहा है? Has coming here triggered your memory? Release your full potential. The power you carry is the key to opening a way through to the ambrosial arbor. अच्छा, वेल्ट क्या बोल रहे हैं? I knew you'd come. When we first mentioned the Xianzhou, there was a sad look in your eyes. वेल्ट ने देखा था। You, but the Luofu is still your home. Thanks for all your help along the way. You're a member of the express crew, Dan Hung. Let's settle this matter as soon as possible. Our journey doesn't end here. Ah, yeah. Traveler looks at you and you both become silent. Is there anything you'd like to ask? Shakes her head. She doesn't want to speak. Nobody can get her to open up. ठीक है. A statue of the High Elder has been greatly changed of weathering. There are small words engraved near its base. Hearken as arbor revives and foes near, we call forth the mighty waters of ancient sea to flood abodes of heaven and quells root of evil. We etch this in stone for all the head. Try to feel the great power here. Beneath the endless rolling waves, the ancient root of the arbor blaze long dormant. They stir and come to life, as if the beast were walking from its strife. The containment mechanism woven by past thrones, the binding that tamed the beast's power known. A fragile net soon to shatter and fall, it decay a warning, heard by one and all. Memories from the past emerge from the darkness tightly gripping you. Cutscene, let's go. भाई इन लोगों ने म्यूजिक डाला है इसमें। What? ओ भाई What?
The Imperator Lune arrived. Oops. Mentioned that Scale Gorge waterscape was once the location of Dragon Palace. Small wonder. Look at all these submerged structures. Bro, क्या था ये? Fortunate enough to be here. भाई क्या? Upheaval period. भाई क्या बनाते हैं यार ये लोग भाई यार. An age passed. The palace was left in ruins, and the Vidyadhara used their sacred homeland to imprison the Arbor. The Luofu and the Xianzhou are greatly indebted to them. Lady Fu. Here, General. Remain here. Lead the Cloud Knights in defense of this passage. We must prevent further incidents. Jing Yuan, General, are you planning to face? कैसा लगा cutscene, bro? Epic. I wouldn't say so. I'll be counting on a few friends for support. General, don't cast us aside. We're willing to go with you. भाई इधर भाई रुकने के लिए बोला तो रुको भाई, हम जा रहे हैं ना उसके साथ. आपके जनरल को कुछ नहीं होने देंगे भाई. भाई तुम लोग शिएनजो को प्रोटेक्ट करो भाई इधर रह के. I understand your sentiments, soldiers. But the adversary ahead of us is not an abomination of abundance. They are a Lord Ravager of the Antimatter Legion. Crossing this line will bring you into the conflict between the Rainbow Arbiter and the Ruin Author. You have a more important duty. Cloud Knights, attention! After I enter the Ambrosial Arbor, and if the seawater returns to its original state, you must withdraw immediately. आपका नाम क्या है भाई? गर्व नाम है क्या आपका? GA4VV. वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सएप के हालचाल यार? आपका नाम बताओ यार एक बार. हाँ जी, अच्छा गर्व भी है. मस्त नाम है यार. I entrust you with the important task of relaying the full account to the other Xianzhou ships. बढ़िया, nice. I trust you will be here to reissue the order in person. But whatever the outcome, I will do as you command. अबे हंस क्यों रहे हो? सच में मस्त नाम है यार. Spoken like a true general. भाई क्या ही स्टोरीज है भाई, क्या ही अपडेट है भाई. मजा आ गया यार. शीश भाई, इतने रात तक स्ट्रीम कर रहे हो यार. जस्ट जाने ही वाला था मैं. ये इतना लाइक एक पार्ट कर लूँ ना मैं, खत्म करे स्टोरी का तो मजा आएगा भाई. मैंने सोचा तो इतना कर दिया मैंने, अभी जाने ही वाला था. शीश. और बताओ. मैसेजेस आ रखे, कल देखेंगे मैसेजेस थोड़े से. नीचे जाएंगे कल आराम से. आई थिंक अभी लास्ट फाइट ही है ना उसके साथ, वो बड़ी सी आंटी के साथ. भाई क्या ही जगह बनाई है भाई. अबे भाई साहब ड्रैगन घूम रहा है भाई यहाँ पे तो. ओह माय गॉड, एपिक ब्रो, एपिक. हेड्स ऑफ टू होएवर्स. भाई क्या ही बनाते यार ये लोग. मजा आ गया. क्या ही कटसीन थे, क्या ही वो टिंग्यून वाला ट्विस्ट था भाई. शीश. यानशिंग का पावर बताया इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा. ब्लेड का बताया. मजा आ गया, बहुत मजा आ गया यार. लेट्स होप फाउंटेन भी इतना ही मस्त हो. वाटर वाटर हो रहा है ना होएवर्स में आजकल. यहाँ पे भी वाटर, फाउंटेन में भी वाटर. मजा आने वाला है भाई. ओके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. दैट इज इट फॉर टुडे स्ट्रीम गाइज. होपफुली गाइज एंजॉय द स्ट्रीम. अगर आपको स्ट्रीम में मजा आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में जो कि होंगी कल. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट, सी यू सून. बाय 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 गर्व बाय, वेलकम बाय. सॉरी यार आप आए और मेरे को, मैं जा रहा हूँ. कल मिलते हैं ठीक है, मजेदार से और स्टोरी के साथ. गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट. देखेंगे आगे क्या होता है. बाय बाय.